Morning class 7. I am your teacher Nitish Kumar. Today we read computer chapter number 2 for class 7. In this video we learn about chapter number 2 using Excel as a database. Class 7. For this video for the class 7. Now we move forward. So what is a database? The collection of related table with a data is known as database. A collection of related table. When we use so many tables, where there is some relation between the one another, it's known as the relation between the table. For example, your school, there is so many table for your attendance. We make a different chart. It's also known as a table. For your fee is a special chart. It's also a table. So everybody there is some relation. Your name, admission number, class. There is so many relationship between these tables. So these are a related table we use as a database. Some advantage of database: easy retrieving of data. We can retrieve the data from any places. When our database are connected, then we can use our data at any places. Redundancy of data, inconsistency. अगर ज़रूरत ना हो तो डेटा को ज़्यादा इनकॉन्सिस्टेंसी या फिर दोबारा लिखना ना पड़े, इसके लिए हम लोग डेटा का यूज़ करें डेटाबेस का. फॉर एग्जांपल हमारे पास ही डेटाबेस है, किसी और के पास भी डेटाबेस है, तो उसको फिर से आपका नाम लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो वहाँ से कॉपी कर लेगा. ईजी सॉर्टिंग ऑफ डेटा. डेटा का आसानी से हम लोग सॉर्टिंग कर पाते हैं, जिससे हम लोग ये बता पाते हैं कि कौन कब एब्सेंट था, कौन कब आया था. तो ये ज़्यादा आसानी से ईजी सॉर्टिंग ऑफ डेटा होता है. हाई डेटा सिक्योरिटी. सिक्योरिटी बढ़ जाती है. इससे क्या होता है, अब अगर हम लोग हर एक डेटा को अलग अलग जगह पे स्टोर करेंगे तो उसको भुलाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. लेकिन अगर एक डेटाबेस के अंदर होंगे, देन इट्स वेरी इजी टू फाइंड आउट एंड इट्स वेरी टू सिक्योरिटी. इजी मैनिपुलेशन ऑफ डेटा. डेटा को आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जा सकता है. सो in this chapter we learn about some MS Excel. So this is the MS Excel. First of all, we have to know what is MS Excel. MS Excel is an application software. It's also known as the spreadsheet program. In our next chapter we have to read about the MS Excel deeply, but first we know how can we use the MS Excel as a database. So first point is using forms. But in your Excel the form is not here, so how can we get our form at here first? So for that thing you have to go in a file tab, go in a options area, go in a quick access toolbar, because we want our form in the quick access area. This is known as the quick access area. So quick access toolbar, choose the things which not in the commands, not in the ribbon. I am choosing. Now you see the form is here, I think. So go to the F area first. Now see the form is here. We can add one form already, so first I am going to remove you. You can't remove it, but I am remove you for you only. Now I am adding one more time, but just click on it and click on the add button. Now the form is added. Now click OK. Now your form is added here. So what is the use of form? So we have to click here. हम जैसे इस पर क्लिक करेंगे एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, ओके दबा देना है. ठीक है. अब हम लोग एक नया चार्ट बनाते हैं. पहले उसके लिए हमें एक नया चार्ट बनाना पड़ेगा. सो वी हैव टू टेक वन न्यू फ्रेश पेज. सो आई एम टेकिंग अ न्यू फ्रेश पेज. Look, your frame is here. So I am putting the data, for example name, class, roll, math, science, SST, Hindi and English. Now when the data manipulation time or the data feeding time, then we can use the frames. Now look at this one, press the OK. Now these columns we are created right now. हमने अभी यही सारे कॉलम बनाए थे. अब मैं जैसे ही इसमें डेटा डालूंगा, डेटा अपने आप यहाँ चल जाएगा. चलिए देखते हैं. नेम में कुछ डालते हैं, रवि. देखिए रवि सिर्फ चला गया. ठीक है. मुझे अगर पूरा लाइन में डेटा डालना है, देन हम वो भी कर सकते हैं, या किसी स्पेशल साइज में डालना है तो हम वो भी कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं साइंस में डालना चाहता हूँ. मैंने डाला एंड देन क्लिक ऑन द न्यू
चला गया ना लाइन नंबर 2 में। अब मैं लाइन नंबर 3 में पूरे में डेटा डालूंगा। Ravi, now click on the next table, sorry, class 7, next table, roll number, he got it something in math, in science, other subject, and that's this one. Then click on the new. When we click on the new, the data automatically goes in a same column, chala gaya. So that is the way how can we feed the data with the using form. I am showing you one more time. I am just close it and then open the frame one more time. For clicking here, I am clicking mouse here for I want to data fit in this area. Now frames, okay, we have the data here automatically Ravi, but I want to change, then I'm Ram. You can write anything, sorry, my mistake. First you have to go in a next line, then when he is showing new record here, okay, now the data, for example H, class 4, roll number 8, he got it something in math, science, SST, Hindi, English. Now click on the new, or you can also click on the enter. Now you see the data is fitted. How can we select our data? The next topic is how to select our data. For this one, you have to enter a data. For example, I am putting H and then criteria. Okay. Now, when we click on the criteria, then search the data. For example, I want to search the data of Ravi. I am writing Ravi, and then find preview. Look, the Ravi data is load. रवि का डेटा यहाँ पे लोड हो गया, हमने इसे लिखा और ये लोड हो गया। अब हमको रवि का डेटा डिलीट करना है, देन क्लिक डिलीट। Look, the Ravi's data is also deleted. So we see the two things with one and another. चलिए फिर से एक बार करके देखते हैं। हम लोग क्राइटेरिया में जाएंगे। फर्स्ट, फॉर सर्चिंग एनी रिकॉर्ड वी हैव टू गो इन अ क्राइटेरिया, click anyone's detail. For example, I want the Ram detail, then Ram, find. So because there is only one data in Ram, so it's showing only one data. Now I want to delete this whole data, then click on the delete option and then okay. So our data is deleted. I want to delete the edge data, then edge data is selected. But if I don't want to delete the edge data, then go to the back. There is one more edge. So I am deleting this edge data. Okay. So this is the way how we use with the forms. Now our next topic is sorting of data. So there is not too much data, so we go in our previous sheet. There is so many data. Now we sorting our data. For sorting our data, first you have to select this one. I am selecting this one, and then for sorting data you have to go in a data tab. Where we go? We go in a data tab, and there is a sorting. यहाँ पे sorting आपको मिल रहा है, sorting and filtering group में। मैं sorting पे क्लिक करता हूँ, देखिए अपने आप R ऊपर चला गया है। ऐसे आपको यहाँ पे एक लिस्ट भी मिल जाएगा, आप उससे भी सॉर्ट कर सकते हो। ओके, आप डायरेक्ट सॉर्ट कर सकते हो। डेटा को सेलेक्ट कीजिए एंड देन क्लिक A to Z. It's very easy to do. Now filtering the data. When we click on the filter, then every column have the buttons like this. What is the use of this button? When our cursor go in this button, it's showing to the hand shape. Now I'm clicking on this one. Now which data I'm going to select it. I'm selecting only one data, 2. Now only only the data will show which roll number is 2, and we can do with anyone. Okay, this select all and this one. If I'm selecting select all, click OK. Then first we have to remove the
sir, from here select all. Now we have the all data. Now in SST, if I want to do the things in SST, I'm only selecting one data 74 and then click OK. Now I am showing the data of 74 only. Now the last topic is for you, how to printing a data in two columns with together. हम दो जगह पे एक साथ डेटा कैसे फिल करेंगे, ओके. और इट्स थिंग इज नोन एज ग्रुपिंग ऑफ शीट्स. हम कैसे शीट्स का ग्रुपिंग बनाएंगे, ओके. So for this one I am going to select this one first. I am going to copy this one. I am copying this data and go to the first cell one more time, selecting the data, paste, create one more sheet because we want to add the sheets, okay. Our data is here. So how can we write data in two sheets together? So first click on the first sheet and then press the control, continuously press the control, click on the sheet number 2. Now you see both are in a same color. Now both are sheet in the same color. अब क्या है कि दोनों एक ही कलर में होंगे. क्या किया हमने, पहले शीट को किया, फिर कंट्रोल बटन दबाए रखे, दूसरे शीट पे क्लिक किया. नाउ करेंटली शीट 1 इज एक्टिव, हमारा शीट 1 एक्टिव है. अब हम यहाँ पे जो कुछ भी लिखेंगे, मैं एक और डेटा लिखता हूँ, रवि का, कोई भी दे देते हैं नंबर इनको, ओके. नाउ दिस होल थिंग, this line I am not writing, I am writing in a sheet number 1, look, okay, but this data is automatically go to the sheet number 2 also, गया ना. अब मैं sheet number 2 में कुछ लिख के देखता हूँ. मैंने लिखा है, so it's not going in a sheet number 1, but when we write anything, okay. So if you want to fill the sheet from one to another, then click on the one sheet, press the control button again and then go to the sheet. Now I am writing anything, for example I am writing this thing and it's automatically go to the sheet number 2 also, हुआ ना. तो अगर हम एक बार फिर से इसको छोड़ दें, अब नहीं होगा क्योंकि हमने उस शीट को छोड़ दिया है. शीट में अगर क्लिक किए हुए रहते तो होता, ओके. So this is your chapter number 2 in class 7. Thank you for watching.